Assalamualaikum students. Today we are going to practice the past paper questions related to momentum and particularly the theory or structured questions. And we'll start from question number 1. So in this question, figure 2.1 shows a dummy of mass 70 kilogram used in a crash test to investigate the safety of new car. The car approaches a solid barrier that is 20 meters per second. It crashes into the barrier and stops suddenly. अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट आप देखें कि जब वो ये कह रहा है कि स्टॉप सडनली, तो इट मींस दैट कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है यहाँ पे. कैलकुलेट द डमी इमीडिएटली बिफोर द कार क्रैश. अब मोमेंटम का यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, दैट इज एम वी. मोमेंटम को पी से शो करते हैं, एम वी. सो इट्स मास इज 70 किलोग्राम, जो कि यहाँ पे मेंशन है, और इसकी जो वेलोसिटी है इट इज 20. So 70 into 20 is equal to 1400 kilogram meter per second. So you can also write it as Newton second. तो ये हमारे पास उसका मोमेंटम आ गया. In the second question, determine the impulse that must be applied to the dummy to bring it to the rest. अच्छा, अब स्टूडेंट इसमें ये देखें कि क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि इम्पल्स जो है वो कितना होगा. अब देखिए, इम्पल्स का जो फार्मूला होता है ना, इम्पल्स आई कह देते हैं उसको, वो दो फार्मूलाज होते हैं, एफ इंटू टी, और या फिर इम्पल्स का फार्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम. मतलब चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस एम यू. तो हमें ये देखना है कि कौन सा डाटा अवेलेबल है जिससे हम ये इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देखिए, फोर्स और टाइम तो गिवन नहीं है, लेकिन मास और वेलोसिटीज गिवन है. तो यहाँ पर हम इम्पल्स कैलकुलेट करेंगे कि जब v जीरो हो गया, तो वो देखिए वो कह रहा है स्टॉप सडनली, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है. यहाँ पे जीरो लगाएंगे तो ये वाला मोमेंटम, ये वाला पोर्शन तो जीरो हो गया मोमेंटम का. तो 0 minus 70 into 20. So its impulse is minus 1400, or you can write it as 1400 Newton second. In part B, in the crash test, the passenger component comes to rest in 0.2 seconds. So time is given. Calculate the deceleration of the passenger compartment. तो अब यहाँ पे deceleration के लिए हम acceleration का फार्मूला लगाएंगे, that is change in velocity over time. So final velocity is 0, initial velocity is 20, ये given है, and the time is 0.20. So it is minus 20 divided by 0.20. खत्म करेंगे तो ऊपर 100 आएगा, 20 से कैंसिल हो जाएगा. So it's minus 100. The seat belt and the airbag brings the dummy to rest so that it does not hit the windscreen. The dummy has an average deceleration of 80 meters. So the seat belt and the airbag brings the dummy to rest so that it does not hit the windscreen. The dummy has an average deceleration of 80 meters per second square. Calculate the average resultant force of the dummy of the mass 70. So we will use Newton's second law, that is F equal ma. Its mass is 70 and the acceleration is 100. So it's 70,000 Newton. The unit of force is Newton. And the D part, the deceleration of the dummy is less than the deceleration of passenger compartment. Explain why this is of benefit for the safety of passenger. अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखें, जो डिसेलेरेशन ऑफ डमी है वो लेस होगा, क्योंकि वो 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह रहा है, क्योंकि पैसेंजर कंपार्टमेंट से वो 100 है. एक्सप्लेन व्हाई दिस इज बेनिफिट फॉर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर.
So as the deceleration is small for passenger, so he will experience less force or impulse, and maybe will have less injuries. This is the answer of question number 1 or 2 to part B. Now we will move to question number 3. The engine of an unpowered toy train is rolling at a constant speed. Speed is constant, and the lever track as shown on the figure. The engine collides with the stationary toy truck. ये जाके इससे हिट कर रहा है ऐसे. तो स्टेशनरी है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी बेटा. Before the collision, the toy engine is traveling at 0.32 मीटर पर सेकेंड. ये 0.32 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है. The mass of the engine is 0.5. इसका जो mass है वो 0.5 किलोग्राम है. Calculate the momentum of the toy engine before collision. इसका momentum निकालेंगे तो इसका momentum होगा mu. So its mass is 0.5, its speed is 0.32, and we need to calculate it. और कैलकुलेटर से इसको करते हैं तो 0.5 multiplied by 0.32. So answer is 0.16 kilogram meter per second. The mass of the truck is 0.30. Calculate the principle of conservation of momentum. Calculate the speed of the joint engine and truck immediately after the collision. So this is the momentum of engine. I'm writing it as P engine, means momentum of engine, plus momentum of stationary truck before collision, and after collision they stick together. Joined engine and truck means they are connecting with each other after the collision. So we will take it M of truck into V plus mass of engine. I'm writing it as ME, mass of engine, and V. I'm not taking VT or VE, velocity of truck, and velocity of engine, because after collision they stick together and they will have same velocity. So I'm not going to write it as VT or VE. So I'm writing it same because they will have same velocity after the collision. So momentum of engine we have already determined it. It is 0.16. Truck is stationary, so its momentum is 0. So we will take V common, and then mass of truck is 0.30 plus 0.50, because mass of engine is 0.5 and I'm taking velocity as common. So I'm going to add it and then we will divide it on the other side. So 0.16 plus 0 is 0.16 divided by 0.80, which is the sum of 0.30 and 0.50. So I'm going to divide this value 0.16 divided by 0.80. So answer is 0.2. So its speed is 0.2 meter per second. Is it okay? I think ये हो गया है question. Now we will move to question number 3. A footballer kicks a ball vertically upward. Initially the ball is stationary, so its initial velocity is 0. His boot is in contact with the ball with for the time 0.050. The average resultant force of the ball is during this time is 180 Newton. The ball leaves his foot at 20. So this is the final velocity. Calculate the impulse. Now we have two options. Force is given, time is given. We just need to multiply force and time to determine the impulse. So value of force is 180 and the time in which the ball is in contact, that is
050. So I'm going to multiply it. 180 multiply by 0.050. So answer is 9. So its impulse is 9 Newton second. The mass of the ball. How can we calculate the mass of the ball now? We can calculate once again by the formula of impulse. That impulse is equal to change in momentum, that is mv minus mu. So impulse is 9. Mass of the ball is not given. We have to determine it. The velocity of the ball is 20, and the initial momentum is 0 because the momentum of ball is 0 because the ball is stationary initially. So sorry. So it's 20 m. So to determine the mass, we need to divide 9 with 20. So 9 by 20 is 0.45. So its mass is 0.45 kilogram. So this is question number 3. The height to which ball rises ignore air resistance. अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमने हाइट डिटरमिन करनी है. अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, you can never destroy the energy, you can never create the energy, you can just change the energy from one form to another form. So when the ball is initially at rest and the footballer is just kicking that ball in the upward direction, so it is giving kinetic energy. So kinetic energy is being given to the ball. So we can say that kinetic energy is equal to potential energy. The formula of kinetic energy is 1 by 2 mv square, and the potential energy is mgh. So mass will be cancelled. Velocity given है उसकी, that is 20 divided by 2, और हम g को भी इधर divide कर देंगे. So value of g is 10. So answer of height will be 20 meter, and you will solve it with the calculator. While the boot is in contact with the ball is no longer spherical. State the word used to describe energy stored in the ball. So वो एनर्जी जो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है ऑन द डिफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी. तो हम ये कहेंगे कि उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो गई है. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 4. State the word equation that defines momentum. The product of mass and velocity. A metal block A traveling in a straight line at 4 meters per second on a smooth surface collide with a second block B, which is at rest. Shows the two metal blocks A and B before and after collision. The mass of the A is 3.2, mass of B is 1.6. After the collision, the velocity of A is 1. Calculate the momentum of A before the collision. So you just need to multiply its mass and velocity. So momentum of A is, the mass of the block is 3.2 and its velocity is 4, because you need to take the velocity before collision, that is 4. So 3.2 into 4, it's 12.8. The velocity of B after the collision, so you will just write it as momentum of A before collision plus momentum of B before collision is equal to momentum of A after collision, momentum of B after collision. This is called law of conservation of momentum. So momentum of A before collision, you have already determined that
and its value is 12.8. So we will write it at 12.8 plus what is the momentum of B? The B is at rest, so its initial momentum is 0. And what is the mass of A? The mass of A is written over here. This is 3.2, and after collision, its velocity is 1.5. It's 3.2. We will just multiply this 3.2 with 1.5. 3.2 and 1.5. So this is 4.8. तो A की जो बेटा मोमेंटम है वो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि वो 4.8 है. यहाँ पे आ जाएगा 4.8 और mass of B I think 1.6 है और इसकी velocity हमने after collision निकालनी है. So we will subtract 4.8 from 12.8. This is 8. And we will divide it by 1.6 to calculate velocity of B. It is 8 divided by 1.6. So its answer is 5. So after collision, the velocity of block B is 5. In the collision that occurred in B, block A and B are in contact with point 050. Calculate the average force that is exerted on B during the collision. So we just need to calculate the average force. So we will use the formula of impulse. Impulse is equal to change in momentum of block B change in momentum of block B, that is MBVB minus MBUB. V is the final velocity of block B and U is the initial velocity of block B. So if the formula of impulse is force into time, momentum of B, we have already determined this. Its mass is 1.6 and after collision its velocity is 5 minus initially the block B is at rest, so its initial momentum is 0. So we will put the value of time here. Time की value ये given है 0.05. So the answer is F equal 1.6 into 5, it is 8 divided by time is 0.050. So 8 divided by 160. So its average force is 160 Newton. After the collision in B, the total kinetic energy of two blocks is less than the kinetic energy of block A before the collision. So just one reason for this. So you can write it some energy may be lost due to friction or sound. Question number 5, explain why momentum is a vector quantity. इसकी reason लिखेंगे because it has direction in the direction of velocity. In a laboratory test, a car of mass 1200 kg is driven A video recording on the test shows that the car is brought to rest in 0.36 seconds when it collides with the ball. The speed of the car before the collision is 7.5. Calculate the change in momentum of the car. Change in momentum of the car. So change in momentum, I can write it as delta P. So it's mv minus mu. So mass of the car is 1200
and its final velocity is 0 minus 1200 into initial velocity 7.5. ये तो फैक्टर 0 हो गया, 0 माइनस, इसका आंसर आ जाएगा 1200 इंटू 7.5, 9000 सेकेंड। एवरेज फोर्स ऑन द कार, टाइम भी गिवन है यहाँ पे, तो इम्पल्स वाले फार्मूला से भी हम कर सकते हैं कि जो इम्पल्स होता है वो इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के। इम्पल्स की जगह पर आप फोर्स इनटू टाइम लिख लें। चेंज इन मोमेंटम आपने डिटरमिन किया 9000, अब इसको टाइम से डिवाइड कर दें आप, तो फोर्स आ जाएगी। सो 9000 divided by time is 0.36. Average force is 25,000 Newton. All right. A different car has a mass of 1500 collides with that same wall, and all the energy transferred during the collision is absorbed by the crumple zone. The energy absorbed by the crumple zone is 4.3 power 5 joule. Show that the speed of the car before collision is 24 meter per second. So कार की बेटा इनिशियल एनर्जी जो थी वो तो काइनेटिक थी ना, इट मीन्स कार किसी स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी के साथ जा रही थी, और उसने वो सारी एनर्जी जाके, जब जाके वो गाड़ी ने दीवार को हिट किया, तो यही एनर्जी जो है वो क्रम्पल जोन के अंदर ट्रांसफर हो गई। सो वी कैन से दैट के लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो हुआ है वो इक्वल हो गया एनर्जी गेन्ड बाय क्रम्पल जोन। अच्छा, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो तो 1/2 mv² होता है, और ये एनर्जी 4.3 10 पावर 5 है। अब आपने इसमें स्पीड को प्रूव करना है कि इट इज 24। सो 2 को पहले तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगी, तो इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा 4.3 इंटू 10 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय mass of the car. So mass of the car is 1500, यहाँ पे गिवन है। तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है इसका आंसर। इट इज 4.3 multiply by 2 divided by 1500. It's 0.0057 into 10 power 5. तो आई थिंक इसको जब 10 पावर 5 को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे so it becomes 570. So you just need to take the v square is 570. So to eliminate the square we have to take square root on both sides. So 570 का square root क्या होगा? Square root of 570, 23.87, which is nearly equal to 24. So answer is correct. So its velocity is 23.87. Velocity 24 निकला। Suggest what would happen to the car if it is traveling faster than 24 when it hits the wall. अगर वो 24 की ज़्यादा भी मूव कर रही होती तो क्या होगा? तो क्रम्पल जोन जो है वो उनमें एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफर होगी, तो उसका इम्पल्स इंक्रीज हो जाएगा। It would have greater impulse. Greater impulse. अब क्वेश्चन नंबर, मेरा ख्याल है इस टाइप के सब क्वेश्चन हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। State an expression for the kinetic energy of an object of mass m that is moving with the speed v. So kinetic energy का फार्मूला स्टूडेंट्स होता है 1/2 mv स्क्वायर।
स्टेट वेदर द काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कोई भी हो वो स्केलर होती है, तो वी कैन से दैट कि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, shows two fairground bumper cars. The car with the passenger of total mass 200 kg is moving in a straight line, is traveling at 2.5 meter per second. When it hits a stationary empty car of mass 50, ये empty है, ये जाके इसको hit कर रही है. After the collision, the empty car moves forward in the same direction at 4. After the collision, the empty car moves forward in the same direction at speed 4. ये repeat हो गया line मुझे लगता है. For the car with passenger determines its momentum when it's traveling at 2.5. तो मोमेंटम तो बहुत इजी होता है, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना होता है जस्ट. सो इट्स मास इज 200, its velocity is 2.5, we just need to multiply it. 200 multiply by 2.5, so its momentum is 500 kilogram meter per second. The speed and direction of its motion immediately after the collision, इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी जस्ट आफ्टर द collision. अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमें इसकी स्पीड भी निकालनी है और इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है. तो मोमेंटम ऑफ कार ए प्लस मोमेंटम ऑफ कार बी बिफोर कोलिजन, इसके कार ए कार बी का वर्ड यूज किया, चलो इसको मैं कार ए बोल देता हूँ, इसको कार बी बोल देता हूँ. ठीक है, इसका मोमेंटम तो हमने निकाल लिया, दैट इज 500. इसका मोमेंटम 0 होगा. अब वो कह रहा है कि आफ्टर कोलिजन जो एम्प्टी कार है वो 4 से मूव कर रही है, इसका मैस है 50, तो इसका भी मोमेंटम यहाँ निकाल लेता हूँ. 50 इंटू 4 इट इज 200, और ये आफ्टर कोलिजन है कार बी का जो मोमेंटम है. तो अब इसको करते हैं सॉल्व. यहाँ पे इसको लिखते हैं कार ए का मोमेंटम 500 है, कार बी का इनिशियल मोमेंटम 0 है. तो आफ्टर कोलिजन कार ए के मोमेंटम को मैं मोमेंटम ए प्राइम कह लेता हूँ, प्राइम का मतलब है आफ्टर कोलिजन, और बी के मोमेंटम को भी मैं प्राइम बोल देता हूँ. अच्छा, कार ए का मोमेंटम तो बच्चों यही होगा ना, एम इंटू वेलोसिटी ऑफ कार ए आफ्टर कोलिजन, जो कि निकालनी है हमें, और मास ऑफ कार बी और इनटू वेलोसिटी ऑफ बी आ जाएगा. अब इधर देखें 500 प्लस 0, ये तो 500 ही होता है. अच्छा, मास ऑफ कार ए क्या है वो देखते हैं. मास ऑफ कार ए तो 200 है, यहाँ पे 200 आ जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ ए हमने डिटरमिन करना है. और मोमेंटम ऑफ, ये पूरा मोमेंटम मैंने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, आफ्टर कोलिजन कितना होगा ये देखें, ये मैंने निकाल दिया 200. अब ये इसको इधर ला के माइनस करते हैं, 500 को इधर ले आएंगे, इस 200 को इधर ले आएंगे इधर, तो 500 माइनस 200 कितना हो गया, 300 इज इक्वल टू 200 इंटू वेलोसिटी ऑफ ए. अब इसको डिवाइड करेंगे, 300 डिवाइडेड बाय 200 करते हैं, 300 divided by 200, it's 1.5. So its velocity of car A is 1.5 मीटर पर सेकंड. यानी कि आफ्टर कोलिजन वो जो एम्प्टी कार है, बल्कि जो दूसरी कार है, ये वाली ए वाली कार जिसने जाके हिट किया, जिसमें ऑलरेडी जो है वो कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी आफ्टर कोलिजन 1.5, और इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड ही होगी क्योंकि ये पॉजिटिव वेलोसिटी आई है. और यहाँ पे देखते हैं 1.5 मीटर पर सेकंड. Fixed to the front and back of the cars are large springs. When the car collides, the spring compress. The total kinetic energy of car after the collision is equal to the total kinetic energy of car before collision. Describe the energy transfer that occurs as the cars collide and then separate. एनर्जी कन्वर्जन क्या होगी कि सबसे पहले जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है जब जाके हिट करेगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में. टोटल काइनेटिक एनर्जी
Fix the front and back of the car are large springs. When the car collides, the spring compress. The total kinetic energy after the collision is equal to the. अब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इट मीन्स दैट कि एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही। तो जो उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, और फिर वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? कंप्रेस होकर जब वो रिलीज होगा स्प्रिंग, तो फिर वो दोबारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा जो था टॉपिक। मैंने आपको मोमेंटम के थ्योरी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए। होप कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी और बड़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। और लास्ट में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाऊँ वो सब आप तक पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।